नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच में। यहाँ पे हम बात करते हैं नई कंपनीज की जो हमारे मार्केट में आने वाली है, लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बारे में हम जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। आज हम बात करने वाले हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ की जो आने वाला है। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं, एमडी एंड सीईओ। एक बार उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद जानेंगे कि कंपनी के खास फीचर्स क्या हैं, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है। स्वागत करते हैं अनिल कोथुरी जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Hello. Hello. So first of all, congratulations for the upcoming IPO of Fedbank Financial Service. Thank you. Thank you very much. Yeah. Sir, first we wanted to ask, can you please give the basic overview of the company, about the company working? Sure. Fedbank Financial Services, or FedFina, is a subsidiary of Federal Bank. We are present in 16 states across the country. We have 575 branches. Our mission is to empower emerging India with easy access to loans. That means we serve the small self-employed customer for his working capital needs. We do this through three kinds of products: gold, loans against gold, loans against property, or unsecured loans. So that really is FedFina. What we have is an AUM of about 9,100 crores as of March 23 and growing. Right. तो कंपनी के बारे में बेसिक ओवरव्यू ले लिया है, लेकिन सर अगर अब हम पूछना चाहें कि जैसे कि आपने बताया कि ये फेडरल बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका भी आईपीओ आने वाला है। अगर कंपनी के बारे में बात करें सर, जैसे कि आज आरबीआई का एक सर्कुलर भी आया है जिसके ऊपर पर्सनल लोन के ऊपर उन्होंने जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसके ऊपर एक रडार रखी है। जो हम ये समझना चाहेंगे कि जो फेड बैंक का आईपीओ आने वाला है वो उस कैटेगरी में तो नहीं है, हमें उस चीज से, उस सर्कुलर से कोई खतरा तो नहीं है कि हाँ जो अब हमारा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा या जो लोगों का लोन लेना है वो कहीं ना कहीं पर्सनल लोन कम हो जाएगा। फेडरल बैंक ऐसे किसी उसमें तो नहीं है कि पर्सनल लोन के उसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। जी नहीं, हमारे ये लोन जो होते हैं, we are 86% secured, which means 86% of our loans are gold loans and mortgage loans. And even the remainder are working capital loans to self-employed individuals. These are not loans for consumption. So it's fair to say that the impact on of the RBI circular on us will be quite limited. ओके, तो वो जो सर्कुलर का जो हमें डिसएडवांटेज है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जो हमारे लोन्स है वो एक अलग कैटेगरी के हैं जिसके ऊपर आरबीआई का भी ऐसा कोई भी फैसला अभी एज ऑफ नाउ नहीं आया है। सर अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट ईयर्स? Over the past years, as we rapidly scaled up our operations, our assets under management and our profitability have increased. Our AUM, or assets under management, have gone up from 4,800 crores in March 21, uh, uh, to 6,200 in March 22 to 9,100 in March 23. Our profits have gone up from 61 crore rupees in March 21 to 103 crore rupees in March 22 to 181 crore rupees in March 23. Our return on equity has had a similar upward trajectory from about 8.5% to 10.5% to about 14.5%. So that's been the trajectory of growth of the top line, bottom line, and profitability of the company. So now if we talk about the issue size and the book size, so what is the issue size of the company? It is an issue of 1,092 crore rupees. This is split as a primary fundraise of 600 crore rupees, which will go to the company, and a secondary of 492 crore rupees. Our existing shareholders are selling shares worth 492 crore rupees in the IPO. Okay. And अगर हम बात करें कि जो पर शेयर का प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 133 to 140 है, राइट? एंड द मिनिमम लॉट साइज विल बी? The minimum lot size is 107 shares. Okay, so and investors can apply in multiples of 107 shares.
ओके, ठीक है सर, ये जानकारी तो ले ली है, लेकिन अब अगर एनबीएफसी की बात करें, अगर हम पास्ट का डेटा देखें और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आफ्टर कोविड की, तो कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि जो लोन लेना है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। काफी सारी चीजें नई नई आ गई है, काफी सारी एनबीएफसीज जो हैं वो काफी मार्केट में आ गई है, जिसके थ्रू लोग काफी ज्यादा पर्सनल लोन हो या चाहे होम लोन हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन्स की बात करें, वो काफी ज्यादा रेशियो बढ़ चुका है आफ्टर कोविड। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, काफी सारी मार्केट के अंदर हमारे पास पेयर्स कंपैरिजन भी है। तो जो हमारा फेड बैंक का आईपीओ आने वाला है, वो अपने पेयर्स से किस तरीके से आउटस्टैंड करता है? कंपनी के पास ऐसे कौन से चीजें हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको अदर पेयर से थोड़ा एक डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है? Yes. So we cater to the small self-employed customer, and as a target market, that is an extremely attractive one to serve. Okay, less than 20% of the demand for loans of this segment is catered to, and the remaining goes are begging. So that really is a vast and attractive target market, which offers an immense amount of potential for growth. Okay? And that is the potential that Fedfina hopes to capitalize on and grow in future. Okay. Now we seek to do that through a combination of two products, which is working capital loans and gold loans. Now this is a unique combination of products which gives us several advantages. It gives us growth in different environmental scenarios. When times are good, people like to borrow for working capital. But when times are bad, as we saw during the 2 years of COVID, lending against gold remains the only viable form of lending. So during COVID, we saw our gold loan book actually double while our working capital book stayed constant. So we have a resilient business model that is primed for growth, and we are part of a marketplace that offers us this attractive opportunity for growth. Now, to cater to this, we are adequately resourced in that we are rated AA, we have access to a low cost of debt, we have a large branch network of 575 branches, and we have 4,000 employees manning these branches. So at one side, we have the opportunity to grow, and on the other side, we have all the resources to grow. So we believe that's a happy coming together of both these, which should help us succeed in future. राइट, ठीक है। तो पीएस के सामने हम किस तरीके से आउटस्टैंड करते हैं, वो हमने जानकारी ले ली है। सर, एज पर द डेटा अगर हम देखें तो कंपनी के 191 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ऑफिसेज हैं, जो कि अलग-अलग 16 स्टेट्स में डिवाइडेड हैं और यूटीज में भी डिवाइडेड है। इज दैट ट्रू? और इसके अलावा कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं आगे के लिए? There are borrowers across the country who need loans for working capital. Okay? Every year, we decide what our plans for growth should be in terms of geographical expansion, and we move into the next most attractive kind of regions. This is an exercise that we will do every year and continue to grow our AUM on the back of geographical expansion. राइट, ठीक है। तो एक्सपेंशन प्लान के बारे में जानकारी ले ली है। सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, इज देयर एनी काइंड ऑफ डेट ऑन द कंपनी एज ऑफ नाउ? Yes, the company has borrowings from banks as well as NCDs in the market, so those are outstanding, and we have a capital adequacy of about 19% as of June, and the remainder is debt. Okay, so As we raise 600 crore rupees in this IPO, that will augment our capital position, which we will use to leverage and get further debt and deploy that for increasing our disbursals for working capital loans. राइट, तो कंपनी के बारे में सर, आई हैव आस्क्ड एवरीथिंग, चाहे वो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात हो, चाहे वो बात हो कंपनी के फाइनेंशियल की, कि ऑन पेपर कंपनी की जो इस टाइम पे सिचुएशन है वो कैसी है, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और सारी की सारी जानकारी, चाहे वो डेट के बारे में जानकारी है, वो हमने ले ली है, और साथ ही साथ कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान है, यानी कि जो आईपीओ से पैसा आने वाला है, वो हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे ना पूछी हो बट यू वांटेड टू शेयर? Haji, this is a good time to be a lender in the Indian marketplace. Okay, the small self-employed customer is starved of debt, and that is the gap that we hope to remedy as Fedfina. And we have all the resources to achieve this objective. And yeah. ठीक है, तो सारी की सारी जानकारी ले ली है। एक बार फिर से
कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारा आईपीओ आ रहा है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, तो आप भी यहाँ पे अपना जो लक है, आपको शायद से कोई ना कोई लॉट मिल जाए आने वाले टाइम पे, अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस आईपीओ के थ्रू कमा सके। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग आईपीओ। Thank you for having me here. Thank you. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। तो ये थे अनिल कोथुरू जी, जो थे फेड बैंक के एमडी एंड सीईओ। उन्होंने बताया कि जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है वो कैसे हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इस टाइम पे किस तरीके की दिख रही है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल्स को लेके, प्रॉफिट को लेके, वो किस तरीके का है इस टाइम पे। साथ ही साथ हमने जान लिया है कि जो आईपीओ है उसका लॉट साइज क्या है, और जो आईपीओ के बारे में, जो कंपनी के बारे में, जो कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो इस टाइम पे कैसे दिख रहे हैं, मैनेजमेंट का कंपनी के ऊपर क्या कहना है। इसके बाद 22 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इस आईपीओ के अंदर निवेश कर सकते हैं। बस ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच के साथ। धन्यवाद।